अहमद नानफिक और आप देख रहे हैं MR.ADDY'S टेक। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी अरसा वीडियो नहीं बन सकी, उसके पीछे कुछ इश्यूज़ थे, लेकिन अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि प्रॉपरली जो है ना एक अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो को तैयार किया जाए और आपकी खिदमत में पेश किया जाए। और ज़रूर ये बार कोशिश की जाएगी कि उसमें कुछ ऐसा कंटेंट दिखाया जाए, होनेस्टी दिखाई जाए कि ताकि आप उससे जो है ना फ़ायदा हासिल कर सकें। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपको कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाए। इस आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम आपको इसमें कंपैरिजन करेंगे दो डिवाइसेस के दौरान। एक है infinix note8 जो आता है कि 30,000 की प्राइस टैग में, और एक है Vivo y31 जो आता है 35,000 की प्राइस टैग में। इसमें हम चेक करेंगे कि दोनों का ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है प्राइस का, लेकिन इनकी जो है ना स्पेसिफिकेशन वो तकरीबन थोड़ी सेम है। अगर कोई दोस्त इन दोनों मोबाइलों में से कोई मोबाइल लेना चाहता है तो उसके लिए कौन सी डिवाइस बेस्ट हो सकती है, आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है। ओके जी, तो infinix note8 जो infinix की तरफ से आता है, ये 6 GB रैम और 128 GB मेमोरी के साथ आता है। जबकि इसके चिपसेट की बात की जाए तो वो है MediaTek Helio G80, और इसके प्राइस टैग की बात की जाए तो ये तकरीबन आता है 30,000 के राउंड बाउंड आता है। और Vivo y31 की बात की जाए तो ये 4 GB रैम और 128 GB मेमोरी के साथ है। इसके चिपसेट की बात की जाए तो वो स्नैपड्रैगन 662 है, और इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो ये तकरीबन आता है 34,000 के करीब। और अब हम इन दोनों का चेक करेंगे कि चिपसेट का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है और प्राइस का भी तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है। उस हिसाब से इसमें 2 GB रैम एक्स्ट्रा है और इसमें 2 GB रैम कम है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन चेक करेंगे, इनकी एप्लीकेशन रन करके चेक करेंगे कि क्या कौन स्पीड के साथ एप्लीकेशन को रन करता है, और इसके जो है ना बाकी जो फीचर हैं उनके बारे में नज़र दौड़ाते हैं। चलें, इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। Yeah. Unknown brain. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all
Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किन डिवाइसेस के साथ आपको कंपैरिजन चाहिए, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा इसके साथ क्योंकि इस वजह से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हौसला मिलता है। इसके साथ साथ यूट्यूब पे काम करने का और मज़ा आता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।